low. What was the reason behind it? I'm not sure that there is a specific reason, to be honest. I think that's just the way hockey goes. We have created enough opportunities. That's what you know me. I'm always talk about creating opportunities, and if we weren't creating opportunities, then I would be worried. But we are creating opportunities, and we just need to make sure that we focus on the execution of the skill and putting it in the goals. So yeah, I'm quite confident that will come. I'm not sure how many of you were, or most of you would have been in Raukala. You saw how it was a big crowd. There was some one-off things happening there. A lot of people playing in front of that big crowd for the first time. A lot of those sort of things play into it. So to be honest, I was very, very proud of the way that our guys fought in both games. I think I said after the England game that I think that both teams will, that game will stand in good stead as the finals approach. I think, to have a good hit out like that was very invaluable. Push. Yeah. With the qualification for the knockouts in front, is there any chinks in the armor that you would like to address against Wales before the bigger challenges come calling? Yeah, I mean the obvious one, the ways that we score goals, both the corners, we want to get them happening. We also want to try and be scoring more field goals. I'd like to keep the other end at a 0 would be nice, and that's been a pleasing result in the first couple of games. So yeah, I think they're probably the two focus points. Excuse me. आपको क्या सर बुला रहे हैं एकदम डेकोरम थोड़ा सेकंड टाइम में कुछ नहीं बट डेकोरम थोड़ा मेंटेन कीजिए संदीप Hi coach, I have got two questions. An extension of Jaspreet's question. What is the status of Harshik's injury of the sprain? Basically, if you could elaborate on that. And the second question is, it's not often that you have. In fact, this is the first time that you're having a World Cup at two different venues. So how does this adjustment factor come into play? You played 2 matches there, now you're playing 1 year, adjusting to the conditions. I mean, though they may not be that different, but also to the pitch. So yeah. Look, if you had, I think I may have mentioned it straight after. The prognosis did not look good for Hardik at that point. That was just me seeing it happen, knowing the history behind something like that you normally see. The MRI was much better than we had hoped. It gives us a little bit of hope for him to be able to play again in this tournament. What does MRI say? MRI status? Yeah, I'm not going to give you any of that information, but it was certainly better than we had hoped. So that's the first part. The second part was, this is the first time the World Cup for the men, the women experienced it this year. It is a little bit different. However, we've had a very good break. There's been a 4-day break. I think if you had asked me that question and there was only a 2-day break, then that would almost have been like Hockey India League, where you had a play day and a travel day, a play day, a travel day. But so it's okay, and we're now ensconced in our hotel, and we've got training tonight again, and and of course we've played here, a lot. अच्छा माय क्वेश्चन टू कैप्टन अमरप्रीत सिंह कैप्टन पहला मैच में आपने 6 पेनल्टी कॉर्नर आपको मिला, जिसमें एक ही गोल दे पाए आप, तो उसके हिसाब से हम एक पेनल्टी स्ट्रोक भी मिला, आप मिस किए। सेकेंड मैच में भी सेम सिचुएशन, और पेनल्टी कॉर्नर या ड्राफ्ट किकर भी अच्छे हैं हमारे पास, अगर आप पेनल्टी कॉर्नर क्रिएट नहीं कर पा रहे और क्रिएट करेंगे तो डाइवर्ट नहीं कर पा रहे गोल में, कैसे रेक्टिफाई करेंगे आने वाले मैच में? ऑफ कोर्स एक मेजर पार्ट रहता है जब भी किसी मैच होते हैं, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब आपको पीसी मिल रहा है, और आप सही बोल रहे हैं कि कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, बट अभी ट्रेनिंग हमारा जो भी हमें बचा है और वेल्स का जो पीसी डिफरेंस है वो एनालाइज कर रहे हैं हम, एंड होप के जो आने वाला मैच है उसमें
उसमें आपको देखने को मिलेगा उस चीज़ को। बट हम ट्राई करेंगे कि अगर डायरेक्ट जा रहे हैं तो मेक श्योर कि एटलीस्ट ना गोल के अंदर हो, सो वी कैन कहते रिबॉन्ड, और जब वेरिएशन कर रहे हैं तो उसमें हमें प्रॉपर अपना एग्जीक्यूशन होना चाहिए। तो आने वाले मैचेस में आपको देखेंगे। मेरा प्रश्न आपसे सबसे पहले तो सर के मैच की ऑल द वेरी बेस्ट। मैं पूछना चाहूँगा कि आपके मैच से पहले क्या आपकी निगाहें थोड़ा इंग्लैंड के स्कोर लाइन पे भी होगी, क्योंकि अगर वो स्पेन को हरा देते हैं तो फिर हमें वेल्स को उतने मार्जिन से हराना पड़ेगा, उतने गोल के मार्जिन से हराना पड़ेगा ताकि हम टेबल टॉप कर सकें, पूल डी को टॉप कर सकें और क्रॉस ओवर को अवॉइड कर सकें। तो ये चीज़ें भी ध्यान में है या सिर्फ बिल्कुल प्रॉपर गेम परफॉर्मेंस? नहीं, बिल्कुल बहुत सारी ये अपडेट हमें मिलेगी तो बेहतर है, क्योंकि डिपेंड करता है। बट अपने मैच की बात करूँ तो वो हमारा फोकस है कि हमने अपना बेस्ट खेलना। ऐसा नहीं कि अगर हमें चांस है कि हम इजीली मतलब एक या दो स्कोर से भी जीत सकते हैं, तो ऐसा माइंडसेट नहीं है हमारा। तो हम यही ट्राई करेंगे कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ज़्यादा से ज़्यादा हम गोल करेंगे, हमें कोई ऑप्शन ना बचे तो वही ट्राई करेंगे कि अपना बेस्ट करें। So is that an advantage for you as well, that if they will be playing next last, so you know the goal margin? Sorry. Is that an advantage for you that you'll be knowing the goal margin? Oh, yeah, well, I think it gives you an objective and everyone will know what it means to be. Certainly better than, I suppose it's like batting and then going out and you score what you score. If you're always batting second innings, you always know what if you bat second, you know what you've tried. So maybe that is, yeah. Coach, just a question on preparation and mentally, is it any different when you go out in your first two group games and then you go out in your third game where you might potentially be looking at scoring this number of goals? So is there any difference in how the team prepares or how they are mentally? Yeah. As far as the preparation is concerned, there will be no difference. We always try and focus the same way, no matter whatever we are trying to achieve, and we're always trying to win the game. So, I mean, at the end of the day, we're trying to win, and then from there on in, we will see how things go. But and that will be decided by how well we are playing, and yeah. So no, we don't prepare any differently. Final two questions, Putra. अर्मन, ये मैच से रिलेटेड नहीं है, बट अभी रिसेंटली बात चल रही है और जो FIH प्रेसिडेंट है उन्होंने भी कहा कि वो पेनल्टी कॉर्नर्स को थोड़ा और सेफ करने की कोशिश करेंगे, रूल्स पे थोड़ा सा रीलुक होगा ताकि जो डिफेंडर्स हैं, पेनल्टी कॉर्नर डिफेंस जो है वो थोड़ा सा सेफ हो सके। तो उनका सजेशन जो था वो कुछ इस तरह से था कि अटैक में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगे 1-2 सेकेंड, ताकि डिफेंडर्स को प्रिपेयर होने का टाइम बेटर मिले। एज अ प्लेयर आप इस चीज़ को कैसे देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कन्वर्जन आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है, स्कोरिंग उतना इजी हो नहीं रहा है। तो अगर डिफेंडर्स को और प्रिपरेशन टाइम मिलेगा सेफ्टी के हिसाब से, आप एज अ प्लेयर, एज एन एग्जीक्यूटर, डिफेंडर, ट्रैक फ्लिकर इस चीज़ को कैसे देखते हैं? 40 सेकंड होते हैं हमारे पास, क्योंकि मैं भी किसी डिफेंस में इन्वॉल्व होता हूँ। आई थिंक विद इन 40 सेकंड कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हमें फेस नहीं कर रहे हैं। बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको टाइम लग जाता है, बट विदाउट इक्विपमेंट आपको जाना पड़ता है। तो आई थिंक अच्छा होगा अगर हमें टाइम मिलता है, तो क्योंकि हम भी उस चीज़ में आते हैं, अटैक में तो है एडवांटेज मिलेगी कि, बट पीसी डिफेंस की बात करूँ तो ऑब्वियसली अच्छी बात है अगर ऐसा हो। आपको लगता है इससे कन्वर्जन और कम हो जाएगा? ऑलरेडी बहुत मुश्किल है। कन्वर्जन नहीं है, आई थिंक अगर टाइमिंग बढ़ेगा तो उसमें ऐसा ही है कि आप इक्विपमेंट अच्छे से आप आराम से डाल सकते हो, उसमें कोई आपको एडवांटेज नहीं मिलने वाला है। बट ऐसे कन्वर्जन वाला तो कोई बात नहीं है। बट एज ए पीसी डिफेंस में आपको अगर टाइम मिल रहा है तो आप बस उसमें ऐसा कर सकते हो कि आप प्रॉपर इक्विपमेंट अच्छे से डाल सकते हो, आप रेडी रह सकते हो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चेंज नहीं होगा, जो आपका प्लान है वो आपका सेम ही रहेगा। कैप्टन, one question to you. We are Spain से मगर आपका स्कोर थोड़ा कम है, तो कल जो गेम होगा थोड़ा स्कोर बढ़ेगा? बिल्कुल सर, क्योंकि सारे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में, और आई थिंक फर्स्ट टाइम हो रहा है कि पीसी में स्कोर नहीं हो पा रहा है, तो एक अच्छा चैलेंज भी है हमारे सामने, और कोशिश यही रहेगी सर कि आने वाले मैचेस में आपको गोल देखने को मिलेंगे। Thank you. थैंक यू। We will be a top 4 to 5 matches which will be the next match. So how are you looking forward to?
What's the Yeah, we'll decide that tomorrow. I did say it's a nice try though. I like the trying to, but we have a 19 and we have a 20, so we have Raj Kumar and we have Jugraj both there, so both options are available to us. But Rajkumar Pal is a good midfielder, but Raj is basically required. Correct, that's right. Yeah. Let me last question. Sorry. Let me last question. Thank you. Coach, you spoke about creating chances in the matches. Really happy with it. So what sort of conversations you're having with your attackers, forwards and what different are you? Yeah, look, I think the most important thing is a little bit of calmness. Ramsa, that's sort of, I think sometimes they perhaps rushing it a little bit, making not the right choices, and so those sort of things can happen in the heat of battle. As I said, I think against England we made a lot better choices. I thought their keeper played very well. We had a look at some really good clips today, and there were some good shots on goal, some nice saves. I think our positioning is going okay. We just need to execute it. I don't think there's too much that needs tweaking. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you.